Very good morning, dear student of standard 7th. So, welcome back again to online classes and even to my channels. So, last time I have taught you, even I have given you some questions from your geography textbook. Okay. That is lesson number 2, the sun, the moon and the earth. There are few points and fill in the blanks, even short answer that I have given you in the base of questions. Okay, so here are the answer which I will tell you today through my video, and you have to check it out. And you, if you have not written, then please write it down in your book. Hope so you all can see it. First one, motion of the earth are. What is the motion of the earth? Motion of the moon are. Sorry, it's the motion of the moon are. मून के मोशन को क्या कहा जाता है? इट्स एक्सेल एंड ऑर्बिटल मोशन. सेम क्वेश्चंस आई हैव गिवन यू इन फिल इन द ब्लैंक्स एज वेल एज नेम द फॉलोइंग. सो जस्ट रिचेक इट. द शेप ऑफ द मून्स ऑर्बिट इज elliptical, elliptical, elliptical. Hope so you can see the answer. When the moon is closest to the earth in its orbits, the position is called perigee. जब मून अर्थ के क्लोज में होता है तो वो पोजीशन को क्या कहा जाता है? इट इज़ perigee. When the moon is farthest from the earth in its orbit, the position is called perigee distance. The position is called apogee. The moon जब अर्थ से farthest रहता है, दूर में रहता है, तो उस पोजीशन को apogee कहा जाता है. perigee distance is about, perigee का डिस्टेंस क्या है? It's 3,56,000 किलोमीटर. apogee distance it's 4,07,000 kilometer. You have to write the kilometer. If you won't write kilometer, then your answer will be wrong. The changing illuminated part of the moon seen from the earth are called phases of the moon. The illuminated are, जो आधा पार्ट मून का दिखता है, ठीक है, हम लोग ऐसे अगर हम लोग ऊपर आसमान में देखें अर्थ के तरफ, ठीक है, अर्थ के तरफ तो नहीं दिखता है, मून के तरफ दिखता है, लेकिन जो एल्यूमिनेट पार्ट जो है मून का, ठीक है, जो हम लोग अर्थ से देखते हैं मून की तरफ, तो वो आधा पार्ट जो हमको दिखता है उसे क्या कहते हैं? फेजेस ऑफ द मून. द फेजेस ऑफ द मून फ्रॉम न्यू मून डे टू द फुल मून डे इज वैक्सिंग मून. न्यू मून डे टू फुल मून डे, यानी जब जिस दिन मून रहता ही नहीं है स्काई के ऊपर, और फिर उसके अगले दिन से थोड़ा पार्ट उसका दिख के आता है न्यू मून डे तक, फुल मून डे तक, उसको क्या कहते हैं? इट्स वैक्सिंग मून. द फेजेस ऑफ द मून फ्रॉम फुल मून टू अ न्यू मून डे इज waning मून. द शेप ऑफ द मून व्हेन द अर्थ, moon and the sun make the angle of 90 degree, that is semicircular. The angular distance between the moon and the earth's orbit is 5 degree. The angular distance between the line joining the earth, the sun, the moon of each moon day is 180 degree. The line joining to the earth, the sun and the moon angle an omega angle of 0 degree on each. जो लाइन जॉइन होता है अर्थ, सन और मून के तरफ जो 0 डिग्री में होता है, ईच हर एक का 0 डिग्री होता है, उसको क्या कहते हैं? दैट इज डे.
the solar eclipse occurs on a solar eclipse कब होता है? न्यू मून डे में. lunar eclipse कब होता है? दैट इज फुल मून डे में. The type of solar eclipse are partial solar eclipse, total solar eclipse and annular solar eclipse. Solar eclipse which is rarely seen, that is annular eclipse. Solar eclipse which is seen when the moon is in opposite position, that is annular solar eclipse. Type of lunar eclipse: total lunar eclipse and partial lunar eclipse. Maximum duration of a total solar eclipse is 7 minutes 20 seconds, that is 440 seconds. अगर हम लोग दोनों को मिला लेते हैं तो it is 440 seconds. Maximum duration of a total lunar eclipse is 107 minutes. Eclipse which confuses animal and bird, that is solar eclipse. Phenomenon when the star or planets appear to hide behind the moon, that is occultations. An example of occultations: total solar eclipse. Great opportunity of astronomy study, that is occurrence on total and lunar solar eclipse. The phenomenon when Mercury or Venus come between the line and the earth and the sun, that is transit. Occultations occurs with reference to, that is reference to whom? To the moon. Transit is associated with the sun. Hope so you understood it. See, these are the questions and these are the following answers of the same questions. Understood? If you have written, then just check it out. If you have not written, then just write it out, because it is very important. एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से कुछ भी आ सकता है. नाउ नेक्स्ट कम टू नेम द फॉलोइंग. यहाँ पर भी हमने कुछ नेम द फॉलोइंग दिया हुआ है. सी, जो मैंने आपको क्वेश्चंस में दिया था. हियर इज़ द आंसर. इवन आई विल टेल यू द डेफिनेशन ऑफ द some of the eclipse and transits. Name the following. Motion of the moon. What is the motion of the moon? ये भी हम लोग ने points to remember में पढ़ा है. That is axial and orbital motion. Type of solar eclipse. There are 3 types. That is total, partial and annular. Type of lunar eclipse. That is total and partial. Eclipse that confuses animal and bird, that is solar eclipse. An example of occultation, that is total solar eclipse. The event of the occurrence of solar eclipse or lunar eclipse, that is astronomical event. Now definition. You have to give the definition of the following words. Hope so you all can see it carefully. Perigee. When the moon is closest to the earth in its orbit, it is perigee. जब मून अर्थ के क्लोजेस्ट में रहता है, बाजू में रहता है, दैट इज़ कॉल्ड पेरिगी. जब मून फारदेस्ट दूर रहता है अर्थ से, दैट इज़ ओपिगी. ठीक है, तो पेरिगी और ओपिगी का डेफिनेशन शॉर्ट में दिया हुआ है. ऑक्लेशंस. द मून रिवॉल्व राउंड द अर्थ. मून जो है अर्थ को रिवॉल्व करता है. When doing so, it obscures a star or a planet, and that planetary body appears to hide behind the moon. This is called occultation. कुछ bodies जो है जब revolve moon करती है अर्थ के तरफ, तो stars में
और प्लैनेट्स के कुछ बॉडीज़ जो है वो हाइड होता है उसके पीछे, तो उसी चीज़ को ऑक्सीलेशंस कहते हैं. ट्रांसिट. इफ़ एन सॉरी if an inner planet like Mercury or Venus come in between the line of the earth and the sun, अगर वीनस और मर्क्यूरी जैसा प्लैनेट अर्थ और सन के लाइन के बीच में आती है और ट्रांजिट ऑकर्स, उसी को ट्रांजिशंस कहते हैं, ट्रांजिट कहते हैं. एट दैट टाइम अ स्मॉल डॉट अपीयर टू मूव अक्रॉस द सन डिस्क. उसी टाइम में एक बहुत छोटा सा डॉट सन के डिस्क के ऊपर से पास होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिट. फेजेस ऑफ द मून. The illuminated portion of the moon disk observed from the earth that keeps on changing every day within a lunar month are called the phases of the moon. Solar eclipse. If the moon comes between the earth and the sun in a straight line on new moon day, the shadow of a moon falls on the earth and the sun becomes totally or partially invisible, is in a shadow zone. This phenomenon is called solar eclipse. Lunar eclipse. On a full moon day, the moon's path revolutions pass through the thick shadow of the earth and the moon become totally or partially invisible. जब मून टोटली और पार्शियली इनविजिबल हो जाता है, द फेनोमेनन इज कॉल्ड ल्यूनर एक्लिप्स. एन्यूलर सोलर एक्लिप्स. समटाइम व्हेन द मून इज एन ऑपिगी पोजीशन, जब मून जो होता है वो ऑपिगी पोजीशन में होता है, अ डीप शैडो ऑफ अ मून इज कास्ट इन अ स्पेस. जो डीप शैडो मून का रहता है वो स्पेस के ऊपर गिरता है एंड डज नॉट रीच द अर्थ, लेकिन वो अर्थ तक नहीं आता है, सिर्फ स्पेस तक आके वो अटक जाता है. From a very small region of the earth, only an illuminated edge of the sun disk is seen in a form of ring. This is called annular solar eclipse. मून का जो मून जो रहता है वो सन की तरफ आके रुक जाती है, स्पेस में आके रुक जाती है, ठीक है, और पूरी तरीके से वो अर्थ के ऊपर नहीं गिरता है. तो सन के बाजू में एक छोटा सा ऐसा सर्कल जैसा लाइन जैसा एकदम बारीक सा थिन लाइन दिखता है, उसी चीज़ को एन्युलर सोलर इक्लिप्स कहते हैं. गॉट इट स्टूडेंट्स? सो द होल थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. नाउ आंसर इन वन सेंटेंस. व्हाट इज द पीरियड ऑफ वैक्सिंग मून? द पीरियड ऑफ वैक्सिंग मून इज द fortnight from new moon to full moon, in which the illuminated part of a moon on the earth keep on increasing, that is called waxing. What is the period of waning moon? The period of a waning moon in a fortnight from the moon, full moon to new moon, in which the illuminated part of a moon seen from the earth keep on decreasing, that is waning. Understood? Now next one. Why can we see the phases of the moon from the earth? We can see the phases of the moon from the earth due to the sunlight reflected from the moon. Now when does the moon appear semicircular in the shape of in the sky? We can see on the first and the third quarter day, the moon, the earth and the sun make an angle on 90 degree, due to which we have half the portion of the illuminated moon in a semicircular shape in a sky. What type of solar eclipse occur in perigee position? Total or partial solar eclipse occurs in perigee position. When does a lunar eclipse occur? The lunar eclipse occurs when the moon enters the shadow of the earth while revolving round it. Got it? So
These are some questions that you have to recheck or you have to write it down from geography textbook, that is lesson number 2. Okay, so here I complete with the lecture. Again I will come with the next half lesson in a next lecture. Till then, have a great day.